On World Environment Day, observed worldwide on June 5, concerns over rising pollution and environmental degradation continue to grow. In Odisha's port town of Paradip, residents are facing major air, water, and soil pollution problems as they claim that industrial waste and dust emissions are affecting both public health and the local ecosystem. It is being alleged that the entire town is covered with coal dust, iron ore dust, and gypsum powder. Environmental damage across Odisha. Locals reported recurring fish deaths and hundreds of people suffering from cancer, asthma, and skin diseases. Meanwhile, the regional officer of the State Pollution Control Board stated that the environmental parameters are being monitored in real time. पारादीप उड़ुवा कोईला गुंड जिप्सम धुआं आईरन धूली प्रचुर मात्रा प्रदूषित करुच्ची पारादीप जलवायु को प्रशासन स्तर हो कि जनसाधारण जब सचेतन न हे या विरुद्ध स्वर उत्तोलन करेंगे ताहले पारादीप दिने एक विनाश करवा प्रदूषितर शीर्ष सीमार जेहेतु पारादीप पोस्ट संपूर्ण भाव में मेकानाइज्ड हेनी किछिटा मैनुअल और सेमी मेकानाइज्ड ऑपरेशन होची तेणु ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस हेवी व्हीकल्स विथ लूज कार्गो सेटा हमर गोटे कंट्रीब्यूटर रहउचंती टुवर्ड्स फ्यूजिटिव डस्ट को कंट्रीब्यूट करिया तो दुईटा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज अछंती तेणु प्रेजेंस ऑफ nitrogenous and phosphorus compounds in the atmosphere does exist in Paradip. Similar conditions are witnessed among the residents in the steel city of Rourkela. The dust and smoke emitted by the increasing number of vehicles, hotels and industries has left the residents to struggle to even breathe properly. Cutting of trees, along with forest fires during summers, is further contributing to environmental pollution. As a result, Rourkela's Air Quality Index or AQI is steadily rising. The Pollution Control Board says that action is being taken by the department. Air purification measures are being carried out at 4 locations. However, residents are raising questions as to why Rourkela's air quality continues to remain poor despite these efforts. आरपटे स्टील प्लांट अच्छी यार सन्निकट अंचल सब स्टील प्लांट सहित अन्य आंसिलरी यूनिट सब अच्छी तेणु ये वृक्षरोपण आवश्यकता सब बेले गछ लगेबार आवश्यकता स्टील प्लांट एरिया बावजूद विभिन्न एरिया रे करिया दरकार जतिक सब इंडस्ट्री माने अच्छी इंडस्ट्री माने मध्य आपणकर जो डस्ट बाहरुची विभिन्न जगह स्लाग आसिक सब फिलिंग होची सेडा एमिति उड़ी पॉल्यूशन करूची लोक घर द्वार सेडा पशुची तेणु ए सब ऊपर किछि रोक भी लगेया दरकार सब जगह सॉल्यूशन अछि एवं सॉल्यूशन सब आम निज हाथ के जदि से तार कार्य ठीक भाव में सुचारू रूप पालन करिवो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन कमी जीवो गत वर्ष तुलन रे ए वर्ष पाखापाखि 17.5% एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट आछे Environment protection. In another scenario, forest is family for the 70-year-old Kapurchand Sabar of Kasipala village in Nuapada's Khariyar block. Over the past 2 decades, he and his daughter Urmila have transformed nearly 20 hectares of barren land into a dense forest, an effort that has earned appreciation from the forest department. जंगल आगे ये थिला आगे एबे जंगल सागुन गछ ओला गछ लीम गछ करण गछ सब प्रकार गछ करण गछ सब अच्छे बहुत अच्छे सब अच्छे जंगल लाग मुझे गाँ तीन हबार आगे जंगल जंगल रे मुझे रोचे कपूरचंद साबर से जंगल सुरक्षा करूछंती ता सहित आमर सेकेंड ईयर प्लांटेशन 20 हेक्टर जोटा अच्छी तार भी देखरेख करूछंती आउ तांकू पुरस्कृत करिवार व्यवस्था। Today, environmental concerns are growing across the globe, with rising population levels and rapid industrialization emerging as some of the primary causes of pollution. However, if pollution is to be controlled, there is a need for the Pollution Control Department to enforce regulations strictly.